India, a country with a population of almost 1.4 billion people, different societies, backgrounds, castes, cultures, and religions. However, we face one common problem: discrimination. We often talk about the differences between genders, religions, and social backgrounds. But have we ever noticed the indifference we show to people who suffer from illnesses that are not even their fault? Regardless of the fact that they have no fault of their own, these people face discrimination, are subjected to untouchability, and are forced to compromise on their dreams and quality of life. They are treated as members of society and are often banished from their homes and families. HIV and AIDS are diseases we've all heard of, often in a hush-hush tone, because it's a taboo in society. Very few people know what it is and its implications on a patient. Society has very conveniently put a label and attached a stigma on the illness, without understanding the depth of the matter. We shot a segment of this film where we interviewed the general public ranging from the age group of 14 to 40 years and recorded their understanding of what HIV and AIDS is. I'm Amol Grover of class 9 Gear from Shivnado School. So, my name is Jashveer Singh. Hello, my name is Robert Prani. Hi, my name is Akshay Ratan Agarwal. I'm Anya Agarwal. I'm Krishna Arora. Hi, I'm Lakshav Jaj. Hi, my name is Regina. Hi, I'm Dr. Bhumika Gandhi. I'm Ritu. I'm Arjun. I'm Vikas. I'm Anusha Datta Gupta from grade 9 Gear. My name is Rani Dalton and I'm from 9 Gears. Hi, I'm Kamna. I am Nishu Singh. I'm Vihan Shwasu. I'm Vasudha Mukherjee. I'm Naisha Arora. I'm Sameer Arora. I'm Vice Principal of Shivnado School, Gurgaon. I know that HIV is a sexually transmitted disease. HIV is like it's AIDS, I think, sexually transmitted disease. I know that it's a sexually transmitted disease. An infection disease, whatever you call it. HIV is a sexual disease that you get from having sexual intercourse. HIV is a human immunovirus. It is a sexually transmitted disease. It's human something virus. It's a virus induced, which is transmitted through various mediums. HIV is a very serious disease. I know that it's a sexually transmitted disease. Well, it's an acquired disease, one of the most dangerous ones we have around the world. Yes, I believe it's a disease that you can contract. HIV full form is human immunodeficiency virus, and it's an autoimmune disorder. And I do know that it is caused through fluid contact or blood contact. People have unsafe sexual intercourse. That's how it's transmitted. Having physical relationship or by using needle. It's basically your body fluid. It spreads through body fluid. One being sexual contact through blood transfusions. I think it's times 1,000 like a fever. Basically, it's very dangerous. It lowers your immunity, so you tend to get all kind of diseases. That's what it does to you. So it's an autoimmune disorder. What it does is, to my knowledge, it makes you a lot more vulnerable to other diseases. So your immune system doesn't function the way it should. It compromises your immunity system, making you susceptible to environmental diseases, more susceptible to environmental diseases. Worst it could do is to finish off the immunity and then expose the body to any of the diseases which could affect. Anyway, this immunity going down tends to, reduce your lifespan. And it doesn't kill you instantly, and it attacks your immune system. So basically, you don't die of HIV, you get infected and you die of some other disease because your body cells, they can't fight the infection and virus. If a person is already having any disease inside, that virus affects that part of the body. Since birth? It affects children? Yes, if the mother is HIV positive, so of course the kid is going to be HIV positive. No, I did not know that. No, I had no idea. Yes, if a child is born to an HIV positive parent, then the child will automatically have it. Yes. HIV is transmitted from mother to a child. Yes, if they were pregnant with HIV or if there's breastfeeding, I was aware of that. Yet it gets transferred from mother to kids, yes. Yeah, surely yes.
Now I think people are aware, but earlier, surely yes, there was a stigma to this because it was related to physical relationship and all. People know that it doesn't occur just by talking to somebody or by meeting somebody, you know. It's also associated with social stigmas based on the cultural beliefs and values one associates with. It's now been accepted in different cultures of the world, but in India, I think we're still struggling with acceptance this. Yes, definitely. I know a lot that people are scared to like have dinner and eat with people who have HIV, even though it's not transmitted this way. So definitely, yes. Not that I've personally come across, but I'm sure that our Indian environment stigmatizes pretty much everything, just specifically considering, you know, it's related to sex, and you know how we are about that. Because you cannot get HIV by hugging somebody or shaking hands. Basically, because it's in Indian society, the prominent cause of HIV spread is having unsafe sex, and people don't talk about it over here. Although you don't get it just by sharing food, so it has very specific things where how it gets transmitted. So you should not be like avoiding those people who have this, because just by sitting with them we cannot get it. It's not just travel through air, water kind of things. People are not so aware how one can get infected, and therefore there is stigma attached. After getting a view from an urban audience, we decided to reach out to an NGO that is a savior to people dealing with this illness. RAISE is a charitable organization that cares for children who were born with the human immune virus, HIV. This idea culminated in looking at how HIV positive individuals are abandoned and are regarded as burden to society. Most of these individuals who have the malady are looked down upon only because they are ill, and most of them have no role to play in living through this affliction. Many of these children lost their parents or were abandoned by their families. Some were brought by helpless parents who could no longer provide medical or personal care. The goal of the team at RAISE is to empower children with HIV, to help fight discrimination, rise above stereotypes, challenges and hardships. They create a life that the children envision for themselves and enable them to reach their fullest potential. We travelled all the way from the national capital to the pink city Jaipur, where this organization is based. And here is what they had to say. मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरी उम्र 34 ईयर है। मेरा नाम 40 साल की है और 12वीं साल लग रही है यहाँ रहता सर्विस से ही है। मेरा नाम और मैं 17 साल का हूँ। माय नेम और मैं 14 साल का। मेरा नाम मीना है और मैं यहाँ 9 साल से काम कर रही हूँ। माय नेम इज विक्रम सिंह एंड एज इज 45। मेरा नाम चेतना कंवर है और मैं रेस में फरवरी 2021 से काम कर रही हूँ। मेरा नाम रितु पारिक है, मैं रेस में अधीक्षक के पद पे कार्य करती हूँ। मैं 18 साल की। मैं 14 साल की हूँ। मेरी एज है 11 ईयर। आई एम 14 ईयर ओल्ड। मैं 2015 से 2018 के बीच 3 साल मैंने कंटिन्यू रेज में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे काम किया है। एज नर्सिंग स्टाफ आपको यहाँ क्या मुश्किलें आती हैं? देखिए, वैसे तो कोई मुश्किलें नहीं आती, क्योंकि एक सेवा नर्सिंग का मतलब सेवा करना है, तो हमारा वही कर्तव्य है कि पेशेंट की सेवा का भाव रख के ही हम लोग काम करते हैं। और आपको पता है रेस यहाँ किस चीज़ के लिए काम करते हैं? यही बीमारी के लिए, HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए। और बच्चों का दिनचर्या कैसा होता है? सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, कपड़ा उपड़ा तार का अंडा धो के खाना पे बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वापस पढ़ाई पे चल जाते 3 बजे। फिर बाद में 3 बजे आकर नाश्ता नुश्ता करते, बाद में 5 बजे, फिर 5 बजे के बाद में फिर खेलते रेस्ट करते। आपका रेस में एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा रेस में एक्सपीरियंस तो अभी बहुत बढ़िया रहा है और मैं यहाँ पे 8 साल से रहा हूँ। तो 8 साल से जब आया था तब बिल्कुल मन नहीं लगता था। फिर यहाँ पे बच्चों के साथ बोला, उनके साथ मन लगने लग गया, खेलने कूदने लग गया, सब बढ़िया लगने लग गया। फिर सब में भूल गए। यहाँ पे साल में घुमाने भी ले जाते हैं कहीं अलग अलग जगह पे, और हमको कुछ स्पोर्ट्स भी खेलने होते हैं, वो भी खिला, जो हमारी इच्छा होती है वो हमको यहाँ पे। और ऐसी कौन सी आपके लिए डिफिकल्टीज आई है बच्चों को लेकर, या बच्चों के साथ आपने क्या देखा है कि डे टू डे बेसिस पे उनको क्या डिफिकल्टीज? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते
इस कि उन्हें लगता है कि मतलब कुछ डिफरेंशिएशन हो रहा है सोसाइटी में, या हम कभी ठीक नहीं हो सकते, या हम नॉर्मल बच्चे की तरह मतलब एडोलेसेंस में मोस्टली जो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं कि हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते, गर्ल्स के साथ हम घूम नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कि उनको डर रहता है कि वो किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो सामने वाले को भी पॉजिटिव करें। और आपका रेज में रहने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी तक तो अच्छा है, यहाँ खूब सारे भाई हैं। आप कितने साल से रह रहे हो? मुझे 9 साल। और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है या ऐसी कौन सी चीजें जो बच्चों को बहुत पसंद आती है? इसमें एक बच्चों को म्यूजिक बहुत पसंद है और डांस वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट है बच्चों को, तो जब भी ये फ्री टाइम होते हैं तो डांस करते हैं। एक जैसे बच्चों के साथ रहना, उनको एक साथ कैसे काम करना है, कम्युनिटी की फीलिंग बिल्ड करना, आपस में साथ रह के धीरे धीरे इनमें कम्युनिटी हो जाती है। जो नया बच्चा आता है उसका 2 से 4 दिन लगता है फैमिलियर होने, उसके बाद वो बच्चा उनके साथ आराम से रहते हैं, अच्छा रहते हैं, उल्टा ग्रुप में रहते हैं, कोई भी काम हो कुछ भी हो एक साथ रह के एकदम यूनिटी के साथ रह के काम करते हैं। मेरा रेज में कार्य करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। अपने सामने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, उनको तरक्की करते देखना, वो जिस स्थिति में आए थे और आज उसमें जो बदलाव आ गया है, वो जिस तरह अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, उसको देख के बड़ी खुशी मिलती है। अंदर बड़ा अच्छा महसूस होता है कि चलो कुछ बच्चों के लिए हम भी कर पा रहे हैं, जो आगे जाके इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएगा। डिफ़िकल्टीज तो बहुत ज़्यादा आती है। एक जब हम बच्चा है, आपको पता है शैतानी भी करता है, सब चीज़ें करता है, तो थोड़ा सा जब हम उसको डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो 10 तरह की चीज़ें आती है। बच्चा बीमार है, बोले नहीं बोले, और ये भी बोलना ज़रूरी होता है, अगर नहीं बोलेंगे तो कोई गलत रास्ते पे ना निकल जाए। तो हर चीज़ को ध्यान रख के, उनकी शारीरिक मानसिक सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही हमें हमारा जो हम कर सकते हैं वो करना पड़ता है। आपका एक्सपीरियंस रेज में रहने का कैसा रहा? मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने रेस में बहुत कुछ सीखा और मैं 2013 से यहाँ से। HIV के बारे में मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, पर ये ऐसी कुछ बीमारी नहीं है जैसे और सब लोग रहते हैं, ऐसे हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमें HIV है। और आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से? अभी मैं 12th में आई हूँ, मेरी इको, BST और अकाउंट्स। और आपको यहाँ में रहने में और घर में रहने में क्या फर्क है? घर में और यहाँ रहने में एक जैसे ही है, बस मैंने यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ सीखी है। घर में जितना मुझे सपोर्ट नहीं हुआ जितना मुझे रेस में सपोर्ट। और आपका अनुभव या एक्सपीरियंस रेस में रहने का कैसा रहा? मेरा अनुभव रेस में रहने का बहुत अच्छा है। मुझे रेस में खेलना अच्छा लगता है, TV देखना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मेरा यहाँ पे रहने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे यहाँ सब लोग प्यार करते हैं। मुझे डांस में रहने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे ड्रामा में बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ जितनी भी एक्टिविटी करवाते हैं उन सब में पार्टिसिपेट लेना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ पे फुल एंजॉय करते हैं। आपके हिसाब से दुनिया में अभी HIV और एड्स के बारे में कितनी अवेयरनेस है? पहले बिल्कुल नहीं थी, अब जो है हो गई है अवेयरनेस अभी काफ़ी। और ये हम इससे पता लगा सकते हैं कि जैसे कि SMS हॉस्पिटल ART सेंटर थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 10-12 साल के आसपास मान सकते हैं तब से ये स्टार्ट हो गया है अवेयरनेस। धीरे धीरे लोग खुद आते हैं अपनी मेडिसिन लेने। पहले लोग हॉस्पिटल जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और फिर वहीं से ही उन लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे वॉलंटियर्स भी भेजे जो गाँव में जा कर इनका प्रचार प्रसार करने लगे कि इस चीज़ को आप ये ना समझे, ये बीमारी है, इसका क्योर पॉसिबल है। तो फिर वो जाके अवेयरनेस हुई है और अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। बहुत सारी जगह अब ART न्यू सेंटर्स भी खुले हैं। तो दवाई इस बीमारी के बारे में 100% इतना अवेयरनेस है क्योंकि काफ़ी लोग हैं अभी भी जो डरते हैं इस बीमारी से। और जो बच्चे अब रेस से बाहर जा चुके हैं या अपना जीवन जी रहे हैं, उनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट या जानते हैं उनका? हाँ जी, हमें आज तक जो भी बच्चा रेस में गया है उसके बारे में सब कुछ पता है। एक्चुअली ये एक NGO नहीं है, फैमिली है, और जो फैमिली का एक बार पार्ट बन जाता है वो हमेशा फैमिली में ही रहता है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे रेस में आइए, बच्चों से मिलिए, विजिट कीजिए और देखिए हम क्या काम कर रहे हैं। Although the government does conduct drives and welfare schemes for these patients, how effective these initiatives are
is a question left unanswered. Raise NGO has successfully sheltered over 50 patients and provided them with the means and skills to live a happy and content life. They have built a sense of community and belonging amongst these children. While making this film, I had the realization that even after getting the best of education, we as members of society are so blind to such pertinent issues. Organizations like RAISE are the true change makers of the world. I am honored to have made a small contribution to this cause. you.